So in unit 4, 6 point is the water management and conservation through horticulture. Means irrigation planning and soil moisture conservation practices. हम लोगों ने irrigation in detail. What is irrigation? हमको क्वेश्चन क्या है कि इन हॉर्टिकल्चर हम वाटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, इरिगेशन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इरिगेशन। बोलो। वाटर सप्लाई करने का आर्टिफिशियल मेथड। ओके, मैंने तुम लोगों को नोट्स से ज़्यादा इरिगेशन एक्सप्लेन की थी, जितने नोट्स में है उस हिसाब से इरिगेशन का एक्सप्लेनेशन भी दी थी। फिर उसके बाद मैं बताई थी टाइप्स ऑफ इरिगेशन। दो टाइप्स के सोर्स थे, मेन सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर मीन सरफेस वाटर एक सोर्स हुआ, और दूसरा ग्राउंड वाटर, राइट। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप at appropriate interval is called as irrigation, right? In supply of water to crop, appropriate interval, at appropriate interval is called as a irrigation. The time and frequency of irrigation vary according to different season, crop and soil types. Okay, फिर हमने डिफरेंट मेथड्स भी देखे थे इरिगेशन के। कौन कौन से देखे थे? टेल मी एनी वन टाइप। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। जो मैंने एक्सप्लेन की हूँ वही टॉपिक तुमको पूछ रही हूँ, राइट? बोलो मेरे को कोई एक मेथड। हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड देखे, मॉडर्न मेथड देखे, कोई एक सिस्टम बताओ मेरे को। सब भूल गए। ड्रिप यस, सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़े थे ना मॉडर्न मेथड में। दो टाइप्स होते हैं मॉडर्न मेथड्स के, स्प्रिंकलर और अ ड्रिप। Sprinkler system, this system is more useful on uneven land, having fewer water supplies in this method. Then means यहाँ पे पाइप यूज होता है, water is supplied using a pipe to one or a more central location within the field. Then when water is allowed to flow under high pressure with the help of pump, it gets sprinkler on the crops. Then drip system में, in this system water is delivered at or near the root of plant by drop, right? Then this is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all level. यहाँ पे इस सिस्टम में, ड्रिप सिस्टम में वाटर का वेस्टेज नहीं होता, यानी हम लोग इस मेथड से वाटर को इजीली मैनेज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इरिगेशन बहुत यूजफुल होता है वाटर मैनेजमेंट में एंड वाटर कंजर्वेशन में, राइट? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, हाँ मैम आ रही है। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? हम लोगों ने इरिगेशन देखे, इरिगेशन में मेथड्स है, दो मेथड्स है यहाँ पे, स्प्रिंकलर है, देन ड्रिप है, और भी है, लेकिन हम लोग, मैं अभी फिलहाल तुमको स्प्रिंकलर और ड्रिप ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रिप इरिगेशन मीन्स वाटर इज डिलीवर एट
or near the root of plant, drop by drop. This is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. This method is important in area where water availability is poor. ओके, हम इरिगेशन के थ्रू वाटर को इजीली मैनेज कर सकते, कंजर्व कर सकते. So water management of horticultural crop water requirement refer to the actual water needs for a evapotranspiration. Evapotranspiration is crop water requirement refer to the actual water needed for a evapotranspiration which are related to soil type and plant growth. किससे related है वो? Soil की type से and plant growth and primarily depend on the crop and development and climatic factors. Means डिपेंड किस पे होता है वो क्रॉप पे और डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स डिपेंड उस वहाँ पे विच आर क्लोजली रिलेटेड टू क्लाइमेटिक डिमांड्स. मीन्स हमको किस क्रॉप को कितना वाटर देना है ये डिपेंड किस पे करेगा, वहाँ की सॉइल टाइप, plant growth, primarily depend on the crop and development and climatic factor which are closely related to climatic demands. Irrigation requirement are primarily determined by crop water requirement. Irrigation means supply of water. So supply of water or irrigation requirements are primarily determined by crop water requirements but also depend on the characteristics of the irrigation systems. इरिगेशन सिस्टम में भी हम लोग ने डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स देखे, जैसे स्प्रिंकलर है, ड्रिप है ना. सो मैनेजमेंट देन irrigation system management practices and the soil characteristic in the irrigation area. Water is essential for vegetable crops. It is absorbed by plant root from the soil through a process of diffusion and osmosis. Besides absorption of water and nutrient from soil, water influence in photosynthesis. Water important क्यों होता है as a nutrient, then means beside absorption of water and translocation of nutrients from soil, water also influences the photosynthesis, respiration, transpiration, nutrient utilization and cell division. Okay, thus the crop plant require water almost throughout the growing season. क्रॉप्स के लिए मेनली क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर. सो thus the crop plant require water almost throughout the growing season. The water requirement varies with crop species and growth stage of the crop. Okay, then what is irrigation? ये तो हमको पता है, अपने ओन सेंटेंस में भी हम लोग लिख सकते हैं. व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर अ ग्रोइंग क्रॉप्स. मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर. हम आर्टिफिशियली जो वाटर सप्लाई कर रहे क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से water to land for a growing of crops. क्यों supply कर रहे? For growing of crops. It is a profession as well as a crop requires certain amount of water fixed certain level throughout its period of growth. A crop of हर crop को different amount में water require होता है at a certain fixed interval throughout its period of growth. In tropical region, heat and light are available in abundance, but the third, that is a moisture, needs to be a supplemented frequently by a artificial application of water. Okay. Next point is when irrigation is needed. When rainfall is insufficient to meet the water requirement of crop throughout their period of growth, need for irrigation water is unavoidable. Where rainfall is sufficient but is not uniform, concentrated as
it usually is in monsoon month. There is acute requirement of irrigation in other periods. Okay, जहाँ पे रेनफॉल अगर ज़्यादा है वहाँ पे इरिगेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ पे इरिगेशन इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा नीडेड होता है। आया समझ में यहाँ तक? And is the advantage of irrigation. So advantage of irrigation, direct as well as irrigation भी एक advantage है। Many and can grow cropping for a cultivation. Crop on to other and productivity is high. अगर होगा तो क्रॉप की प्रोडक्ट क्रॉप रिक्वायर मैम तुम्हारी रिस्पॉन्स आवाज टू कट होती है। the other thereby a productivity crop